So I'm starting the session. ठीक है? Now you don't need a great amount of concepts to understand the initial sums. So I'm not going with the conceptual based sums. These are the sums which can be understood naturally by using common sense, and you're seeing the concepts in relation to capital budgeting to an extent, not much to that. So I'll start the session directly. आपके पास sheet है, वही sheet को मैं यहाँ पे भी open करूँगा, and we'll start. Can you see what I'm trying to do is I'm trying to use questions along with the answer stuff perspective, right? So what we are doing is I'm keeping a sheet simultaneous. That is, one is word file and second is the answer which I'll write it down. So definitely it will at least help you to do it and see it together. एक second रुकना. I just missed the question number. Okay. Using it for the first time. एक second रुक जाना guys. Yeah. Okay. Guys, can you see the question number 26, guys? Aqua Industries, right? तुम लोग के sheet का, everyone. Hello, can you see the screen? ठीक है. अब इस सब से start करते हैं हम लोग. Question 26 of yours, मैंने सब basic sums will be done first. अब ये question, ये सब exam questions pick किए पहले. पहला देखते हैं. Aqua Industries is planning to issue debenture series on the following terms. FE is ₹100. Now the term of maturity is how many years, guys? 10 years. 10 years. And what they're trying to say is, okay, for the first, second, third, and fourth year, they'll be having an interest coupon of 9% per annum on the debenture value of ₹100. For the fifth, sixth, seventh, and eighth year, they'll be having interest coupon rate of 10% per annum. And for the 9th and 10th year, they'll be having interest rate of 14% per annum. Fair enough. So can I say that यहाँ पे at this point of time, what I'll be doing is like, do I have to compute my interest revenues for 10 years? Do you agree? Yes. Now, looking here, the current market rate on a similar debenture is how many percent, guys? 15%. But the company is proposing to price the issue in such a manner that it can yield 16% compound rate of return to the investors. Question here is, okay, the normal yield rate is how many percent, guys? 15%, yes or no? Yes. But company is trying to get its valuation done. The company proposes to price it in such a manner whereby the yield becomes how much? 16. Does it mean that company is trying to give some kind of a discount more by giving more returns to the investors? Yes or no? Yes. Yes. तो मार्केट दे रहा है 15%, हम कितना देना चाहते हैं? 16. तो हम डिस्काउंटिंग रेट जो यूज करेंगे वो 15 होगा या 16 होगा? हेलो, 16. 16 या 15? 16, right? This is where your final CA becomes a bit different from a normal sum. It just keeps you thinking a bit. ये market return 15, हम कौन से रेट से डिस्काउंट करेंगे? 16, because we want it to be at 16. वहां पे बच्चा गलती कर देगा, सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा. The company also proposes to redeem the debentures at 5% premium on maturity. Determine the issue price of debentures.
So can I say the sum is regarding finding the valuation of debenture? Yes or no? Yes. Yes, sir. By using the returns what it gives us for a period of its entire term, that is 10 years, with the appropriate discounting rate applicable to it, that is 16 in this case, and redeemed at what? Redeemed at premium, right? अब यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए इसका फॉर्मेट क्या होगा? Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. फिर यहाँ पे आएगा सेकेंड फॉर्मेट में. मैं आपको पता है यहाँ पे एन्युटी क्यों नहीं कर रहा हूँ, पीवीएफ क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है ना कूपन रेट एवरी 4 ईयर अलग अलग हो रहा है या ना? हाँ. तो अगर कूपन रेट सेम होता तो मैं क्या करता होता है 1 to 10 ईयर्स का पीवीएफ ले लेता एंड कैश आउट एंड रिडम्पशन वैल्यू ले लेता लास्ट में. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होने से रेवेन्यूज ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा है या ना? Yes. यस. तो फाइनली अगर आपको पीवीएफ करना भी होता तो फर्स्ट टू 4 ईयर्स का अलग होता, फिफ्थ टू एथ का अलग होता और एंड में अलग होता है ना? It will be 3 times PPF because that time there is same revenue for 4 years. Are you getting my point of capital budgeting? We'll Yes. keep it simple. I'll keep it 9, 9, 9, 9 for the first 4 years, then 10, 10, 10, 10 for the next 4 years, and then 14, 14 for the last 2 years, right? But can I say on the 10th year the debentures are redeemed? Yes or no? Redeemed at how much premium, guys? 5. So can I say the last stuff on the last year it will be 105 plus 14? Everyone, do you agree? हेलो. अब यहाँ पे आपका थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? You will be having a PV at the rate of how many percent? 16%. आप 3 डेसिमल यूज करो स्टैंडर्डली, 3, 4 वॉट एवर यू वांट टू यूज इट, कीप इट. यहाँ पे पीवी ले लो और पीवी का जो टोटल आएगा यहाँ पे, that will be your answer. Do you agree? Yes, sir. Can you start doing it now? Come on, start. Give me the answer. 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 14 and 105 plus 14.
Give me the answer, guys. So 71.2944. 71 point something. That is correct. There will be some decimal gaps respect to it. Generally, if I keep it precisely 3 decimals, it will be around 33 somewhat, 71.33, and that is also true. कोई issue नहीं होगा. Check out everyone. Everyone just post me a message chat box पे डालो, फटाफट हो गया आपका लिख के मैं आगे जाऊँ. बाकी बच्चे लिख रहे हैं अभी. I'm waiting for 2 minutes. Akshay, got the answer? Or I'm doing it. Okay. ठीक है. Let's move over to the next sum. हम नेक्स्ट सम को करने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इंटर वाले हैं, इसके फॉर्मूलाज लिखा रहा हूँ, ध्यान देना. अभी ध्यान देना. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, उसको हम केडी कहते हैं. केडी, राइट. तो जनरली केडी का एक होता था रिडीमेबल और एक है आईआर मतलब इरिडीमेबल. तो इरिडीमेबल का फॉर्मूला मैं पूछता हूँ पहले से प्रथम को. प्रथम, इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या था? Interest into 1 minus tax upon issue price into 100. Okay. NSP, right? Yes. KD is equal to interest into 1 minus tax. ये आप लोग लिख सकते हो साथ में मेरे, नथिंग टेक्निकल, अपॉन NSP अपॉन डिवाइड है, डिवाइड बाय NSP into 100, right? This is your KD का फॉर्मूला. Now यहाँ पे NSP was referring to what? Net sales proceeds. Sales proceeds. किसी ने कुछ और नाम देखा होगा, बेसिस सेम रहेगा. That is nothing but issue price minus flotation cost. Yes or no, guys? Flotation cost. ये आपको पता है? Do I need to explain this? No, right? Anyone wants this? Issue price less flotation cost. That is your net sales proceeds. Now, इसी formula के अंदर, can I say net sales proceeds nothing but the value, that is the market value? Hello, in extent, if I don't count flotation cost, right? तो अगर मैं इस फॉर्मूला को रिराइट करूं, तो यहाँ पे आप NSP या MB लिखो. मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट? इंटरेस्ट into 1 minus T divided by KD. Do you agree, everyone? KD in terms of percentage, तो मुझे into
100 नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए, बिकॉज आई वांट ब्रैकेट वैल्यू ऑफ इट। ये दो फॉर्मूलाज लिख लो पहले फटाफट। This will help you to find the value of debentures and this will help you to find cost of debt. ये दो interrelated formulas हमने लिखे। ये हो गया irredeemable का पार्ट, not redeemable। इसके आगे there is something called as redeemable debenture, redeemable debt। Now redeemable debt का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को गाइस? प्रथम तू बता वो वाला भी। I don't remember. Anyone else? Anyone? देखो ध्यान दो। So I think it was interest into 1 minus t plus RV minus NSP upon N. Very Something good. like that. The whole upon Yes, RV yes. plus NSP upon 2. By 2. Very good. That's perfect. Cost of debt is equal to interest into 1 minus tax plus redemption value minus NSP। यहाँ पे NSP को आप MV भी लिख सकते हो अगर MV अवेलेबल है तो। NSP minus RV minus NSP by N whole divided by RV plus NSP by 2। इसको मैं खाली अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस divided by RV plus NSP by 2। Here RV refers to principal, RV is redemption value, NSP is your net sale proceeds, NSP can be replaced by market value if available। वहां पे आप लिख सकते हो साइडलाइन करके NSP can be replaced by market value if available। लिख लेना मैं जो कह रहा हूँ। नंबर 2, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं, ध्यान से सुनना। व्हाट डज दिस फॉर्मूला स्टेट्स? ये फॉर्मूला कहना चाहता है कि आपका जो न्यूमरेटर है दैट विल बी नेट कॉस्ट और आपका डिनोमिनेटर है दैट विल बी एवरेज कैपिटल which you have borrowed and the cost what you pay on that capital borrowed, the net cost what you pay net of taxation, that becomes your numerator। तो आपको कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है तो that will be numerator involves the cost and denominator involves the capital raised on average basis। Now let me, ये आपने लिख लिया as the numerator denominator concept। Number 2, न्यूमरेटर के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं और डिनोमिनेटर कैसे अरेंज हो वो देखते हैं। अब इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी इज योर कॉस्ट net of interest, sorry, net of tax, and RV and NSP by N। So let's take an example to understand this। If your redemption value is say 110 rupees out of 100 ka face value and the money what you received in your hand net sale is say 95 rupees, so 110 is what you pay and 95 is what you got, yes or no? 110 is your redemption value and 95 is your NSP। तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया मुझे बताओ? 10. 110 and 95 मतलब कितना गैप हुआ? So 105 है ना? नहीं वो एग्जांपल नहीं प्रथम, वो तो हो गया। I'm just randomly saying 110 and 195 है तो फिर कितना हुआ? 15 रुपया। और अगर 5 इयर्स का लाइफ है, कितना लाइफ है? 5 इयर्स लाइफ है तो आपका एवरेज पेमेंट पर एनम एक्स्ट्रा कितना हुआ? हेलो, कैन आई से दैट? 3 rupees। और 110 minus 95 divided by 5, so can I say 15 by 5, that is 3 rupees। so can I say 3 रुपया आपने every year extra पे किया on average?
because you're redeeming at 15 rupees extra for 5 years. Yes or no? That Yes. has been added to your Yes. cost. That is 3 rupees आपके interest में add हो जाएंगे. Hello, that is clear. अगर उल्टा होता कि मैंने रिसीव किया था 110 और मैं जो रिडीम कर रहा हूँ से 100 रुपीज, मतलब 100 माइनस 110 करूंगा तो मेरे को पैसा आया 110 रुपया और मैंने पे कितना किया ऑन मैच्योरिटी 100 डिवाइड बाय 5, तो कह रहा है से मेरा यहाँ पे कॉस्ट सेव हुआ, आया ना, -10 से. दिस -10 refers to what? Savings of cost. Yes or no? Yes. Yes. Outflow is 100 and inflow is 110. तो -2 जो होगा ये -2 आएगा, राइट? ये -2 किस में से माइनस होगा? Yes. इंटरेस्ट से, आया ना? तो आपको इंटरेस्ट में से आपका ये एडिशनल पेमेंट जो जनरली पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो गया, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. ये प्लस माइनस हो जाएगा, आया ना? Yes, sir. तो फाइनली यू हैव लेस कॉस्ट टू दिस. तो ये आपका न्यूमरेटर क्या सिखाता है? या तो आपका कॉस्ट दोनों न्यूमरेटर से, ये दोनों आइटम से आपका कॉस्ट बढ़ेगा, या ये तो कॉस्ट है ही, इसमें अगर सेविंग्स हुआ है तो आपका नेट कॉस्ट कम हो जाएगा. आर यू क्लियर विद दिस टू, साहिल? Yes, sir. Yes, sir. अब डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है? आरबी प्लस एनएसपी बाई 2. मतलब अगर आपका आरबी 100 रुपया है, अगर आपका एनएसपी 110 रुपया है, तो डिवाइड बाय 2 करना है. तो 100 and 110 by 2 is how much? 105, right? Now tell me, why do we average this basis to arrive at cost of debt? Tejas, Yes, sir. why do we divide it by 2, whereby actual money received is 110, money paid is 100? So because we are calculating the cost over a period of time and not at a specific point of time. So we need an average instead of a certain particular number. Okay, fair justification. Anyone else with any other justification? More detailed? Anyone? There's the amortization of the discount. Very good. Very good. So this has been answered by Tejas. I'll just elaborate a bit more. 110 rupees is received on which day? 0 day. At the start of the year, 5 years, right? Start of 5 years. And 100 rupees is paid at the end of 5 years. Do you agree, everyone? Yes. Yes. तो कहने का मतलब क्या होता है? दो एलिमेंट्स बनते हैं. आपने इस एग्जाम्पल में 110 रुपया पहले से ले लिया, बट आपका 2 रुपया एवरी ईयर अक्यूमुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जो आपने कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया, हाँ या ना, इन दिस एग्जाम्पल. तो आपका 110 रुपया 108 हो जाता है, फिर 106 हो जाता है, फिर 104 हो जाता है, फिर 102 हो जाता है. You get this what I'm trying to say? Your 2 rupees has been discounted in every year, yes or no? माइनस किया ना इन सेकंड एग्जांपल, -2, राइट? तो Yeah. 108 हुआ, फिर 106 हुआ, फिर 104 हुआ, फिर 102 हुआ. ये आपके 4 साल के बेसिस बनते हैं. एवरी ईयर 2 रुपए को हम कॉस्ट से रिड्यूस कर देते ऊपर, आया ना? Yes. अब जब इसी को आप देखो तो 108 प्लस 106 प्लस 104 प्लस 102 करो तो कितना होता है? 100 400 408 8 and 8 and 20 more, right? It's like 440 by 4, sorry, 8 120 420 by 4, yes or no? Yeah. 420 by 4 कितना होता है? 105. 105, that is nothing but what? 110 plus 100 divided by 2 is equal to 105. Everyone, are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला लिख लो, राइट? हैव यू रिटन दिस फॉर्मूला आल्सो?
की नोट्स के अंदर आपको खाली इतना लिखना है कि एनएसपी कैन बी रिप्लेस विद मार्केट वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार मैंने वो आईडी यूज कर लिया, शिट। एनएसपी कैन बी रिप्लेस विद मार्केट वैल्यू, दैट्स द नंबर वन सब गाइस, वो लिख लो नोट में। और यहाँ पे न्यूमरेटर इज नथिंग बट द एवरेज पार्ट टू इट। अब ये होने के बाद इस मैं आगे जाऊं, लिख लिया दोनों। Yes, sir. Same with I have to do it with cost of preference, right? The heading cost of preference is KP. अब यहाँ पे अगर मैं KP कर दूं instead of cost of debentures, cost of preferences, यहाँ पे cost of preferences के अंदर irredeemable में KP, ये तो आपको पता ही होगा। KP यहाँ पे मैं डिविडेंड कर दूंगा, 1 minus T minus कर दूंगा, because there is no tax savings here. I will be doing dividend into 1 plus dividend distribution, अगर है तो सब में, नहीं है तो 0 हो जाएगा, 1 plus 0 अपॉन NSP into 100। और यहाँ पे सेम वे पे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिविड इंटरेस्ट माइनस में यहाँ पे डिविडेंड into 1 plus DDD लिख लूंगा, दिस इज डन। यहाँ पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे वापस खाली ये रिप्लेस होगा, डिविडेंड into 1 plus DDT, यहाँ पे हो जाएगा KP। गाइस आई होप दे आर नॉट गोइंग फास्ट, राइट? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे KP लिख देना, and this is where we finish off that both the elements again and we can go over the sum now. कॉपी कर लिया तो बोलो कॉपी हो गया, आगे जाते हैं। Done, sir. ठीक है, ठीक है। Can you see question 38? John inherited the following securities. Yes. ठीक है। Again exam sum quite good, मजा आएगा। ये 8 हमारे के लिए एग्जाम में आता है and it's like just no clerical mistakes and we are just easily finishing it off. Let's start. John inherited the following securities on his uncle's death. जॉन के पास इतनी सिक्योरिटीज उसके पास आई जब उसकी अंकल की डेथ हो गई। सिक्योरिटी नंबर 1 इज बॉन्ड्स, सिक्योरिटी नंबर 2 इज आल्सो बॉन्ड्स, सिक्योरिटी नंबर 3 इज प्रेफरेंशियल एंड सिक्योरिटी नंबर 4 इज आल्सो प्रेफरेंशियल। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन व्हाट दे आस्किंग इज कंप्यूट द करंट वैल्यू ऑफ हिज अंकल्स पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज है उसका हमें वैल्यूएशन दिखाना है। नाउ वैल्यूएशन के लिए डेटा क्या दिया है, तो इन्होंने बोला है कि बॉन्ड ए के टोटल 10 सिक्योरिटीज है हमारे पास, उसकी कूपन रेट जो है वो है 9%, मतलब इंटरेस्ट 9% है, उसका मैच्योरिटी टर्म 3 इयर्स है और उसका यील्ड रेट जो है दैट इज 12%, उसका यील्ड रेट जो है दैट इज 12%। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए वैसा किया है, 10 यूनिट्स, बॉन्ड बी के लिए भी 10 यूनिट्स, 1000 रुपए का यूनिट है, ऐसे 10 यूनिट्स है, इंटरेस्ट रेट्स, मैच्योरिटी टर्म एंड yield discounting rate given to you here. नंबर 3 प्रेफरेंस और है, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले ये दो देखते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर कैन आई से दैट यू कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एट अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 12% फॉर 3 years and you can find out the redemption value will be 1000, तो उसका PV for today and the combination of two will give you the value of bond A. Yes or no? Yes. चलो एक बार मैं फॉर्मेट देता हूँ, आप शुरू कर सकते हो साथ में। ऐसा हमें 4 वैल्यूएशन करने हैं, तो कैन आई से वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए। वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट
पीवी ऑफ इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे पीवी ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। अब पीवी ऑफ इंटरेस्ट में पहले तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1000 रुपीज is the value of bond, right? 1000 rupees is the value of bond, and how many bonds do we have it, guys? 10, right? Into 10. Total face value 10,000 होगी, into 9% is your coupon rate, और यहीं पे आपका वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्रिएट हो जाता है। ये वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो क्रिएट हुआ इनटू पीवीएएफ at how what discount rate? 12%. PVF of at what rate? 12%. And for how many years? 3 years, right? Guys, तुम लोगों ने ये सब किया हुआ है ना? Yes or no? Yes, sir. तो मैं कुछ explain नहीं कर रहा हूँ, ये सब हुआ है. This is not just the start of valuation techniques. It is connected with IPCC to an extent. Just the start. अब इसका वैल्यू का आंसर बोलो मुझे, क्या आएगा? इसको लिखो और मुझे आंसर बोलो। 2162. 2162, परफेक्ट। 2162 सबको ये आना चाहिए। आप उसका एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज द वैल्यूज इन्वॉल्व टू दैट, ठीक है। अब यहाँ पे पीवी ऑफ रिडम्पशन वैल्यू विल बी हाउ मच? 1000 into 10, यस, मतलब 10 यूनिट्स है ना आपके पास, और इसका पीवी आएगा इनटू पीवी एट विच टर्म? 12%, for how many years? 3 years. This is PV है, हाँ PV। तो उसको थर्ड बेसिस पे PV का आंसर बोलो क्या आएगा? It will be 7120. Check it out. हेलो 7118. 711. 711, ठीक है, 2 रुपए का फर्क ना, चलेगा। You can write that also. अब टोटल कर दो and get me total answer. That will be 9280. 9,280. Can I do the second one first now? Same way, value ये आपका 9,280 आ गया, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड ए हुआ। सिमिलरली टू वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बी, फिर हम प्रेफरेंस देखते हैं। गिव मी द आंसर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बी। आराम से करना, खाई करके शॉर्टकट मत मारना। आपको आपके नोट्स को सस्टेन करने हैं, डोंट डू दैट। अब शांति से पीवी ऑफ इंटरेस्ट, उसका अमाउंट शांति से वर्किंग लिख के करो, शॉर्टकट मत मारो। क्या है आंसर, बताना मुझे। 9275. वेरी गुड, 9275। अब जो लोग साथ में कर रहे हैं, आई होप एवरीवन हैज डन दिस, इट्स ऑल्सो द सेम सम।
मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ. आई जस्ट मिस्ड, मेरा लॉगिन पुराने से हो गया, वापस पुराने